Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to HM Online Academy. HM Online Academy में भली कार अॼु जो असांजो लेक्चर आहे लेक्चर नंबर 3 परसेंटेज जो, जंहिंमें असां फाइंड कंदासीं हाउ टू फाइंड द टोटल अमाउंट। त परसेंटेज में असीं टोटल अमाउंट कीअं फाइंड कयूं अगरि जेकॾहिं असांखे परसेंटेज मिलियल आहे ऐं उन खां अलावा ऑप्टेन वैल्यू या पार्ट असांखे मिलियल आहे त असीं टोटल अमाउंट या टोटल रक़म फाइंड कीअं कयूं परसेंटेज में। सो सभ खां पहिरीं त असीं फार्मूला खे ॾिसूं था त टू फाइंड द टोटल अमाउंट जो फार्मूला असांखे कहिड़ो आहे, उन खां बाद में असीं उन ते फार्मूला खे यूज़ कंदासीं प्रॉब्लम जे अंदरि। सो फार्मूला आहे फार्मूला the total is equal to part upon percentage multiplied with 100. So this is the formula to find the total amount in a percentage में असां टोटल अमाउंट कीअं फाइंड कयूं। पहिरें लेक्चर में असीं फाइंड कयोसीं परसेंटेज, ॿिए लेक्चर में असीं फाइंड कयोसीं हाउ टू फाइंड अ पार्ट आर ऑप्टेन वैल्यू, ऐं लेक्चर नंबर 3 में असां अॼु फाइंड कयूं था टोटल अमाउंट ऑफ द परसेंटेज। सो असां प्रॉब्लम खयूं था, एग्जाम्पल हिकिड़ो खणंदासीं। If in a class 80% students failed in English, if number of the failing candidates is 27 candidates is 27 or 40 is 40. Find the number of students in the class। चलो जेकॾहिं हिकिड़े क्लास जे अंदरि 80% स्टूडेंट्स फेल थियनि था, 80% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश सब्जेक्ट्स में, चए थो इफ़ नंबर ऑफ द फेलिंग कैंडिडेट्स इज़ 40, चए थो उन में फेलिंग कैंडिडेट्स जो जेको तादाद आहे 40 आहे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, त असां टोटल नंबर फाइंड कंदासीं। सभ खां पहिरीं हिन प्रॉब्लम जे अंदरि असीं ॾिसूं था डेटा करूं था, त डेटा असांखे कहिड़ी कहिड़ी मिलियल आहे। सभ खां पहिरीं चए थो इन क्लास 80% परसेंटेज असांखे मिलियल आहे, त परसेंटेज असांखे 80 मिलियल आहे, 80%। देन चए थो स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश इफ़ द नंबर ऑफ फाइलिंग कैंडिडेट्स, त असांखे हीअ छा आहे पार्ट या ऑप्टेन, पार्ट 40 आहे। चए थो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल जेके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आहिनि क्लास में उहे अंदरि केतिरा आहिनि। सो असां टोटल फाइंड कंदासीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उहो तादाद असां मालूम कंदासीं। सो हीअ असांखे मिली डेटा। नाउ बाय पुटिंग द फार्मूलास, फार्मूला असांखे कहिड़ो आहे, फार्मूला
फार्मूला असांखे आहे टोटल इज इक्वल टू पार्ट अपॉन परसेंटेज multiplied with 100. So this is the formula by putting values, by putting the values and formula में values असां put कयूं था. So total बराबर आहे पार्ट असांखे केतिरो मिलियल आहे पार्ट असांखे मिलियल आहे 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज 80 मल्टीप्लाइड विथ 100. So he 0 cancel 8 your table है ना तो 1 टाइम 8 5 the 40. अच्छा 5 के 10 सां मल्टीप्लाई कयोसीं त असांखे टोटल रक़म मिली 50. त असांजा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल केतिरा हुया 50 students in the class. So this is the total value of the students in the class. इहो हुयो असांजो प्रॉब्लम. अच्छा हिकिड़ो असां एग्जाम्पल ॿियो बि खणूं था. सपोज कयो एग्जाम्पल नंबर 2 आहे. चए थो जेकॾहिं इन क्लास 75% students fails in math subjects. If number of failing candidates is 27. Find the total number. Find the total number of students in the class. So सेम तरीक़ो आहे त असांखे डेटा मिलियल आहे. डेटा कंदासीं हुन में परसेंटेज असांखे मिलियल आहे 75 ऐं पार्ट असांखे मिलियल आहे 27. टोटल रक़म या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कयूं. So by putting formula, same formula, so total is equal to part upon percentage multiplied with 100. So असां वैल्यू पुट कयूं था. टोटल बराबर पार्ट असांखे केतिरा 27 divided by 75 multiplied with 100. So simplify कयूं असां हिनखे. 3 your table ईंदो 3 9 the 27 3 2 the 6 3 5 the 15 त 5 टेबल 4. The total number of students असांखे केतिरा 36. So this is the best way to find the total value of the percentage.